The key announcement and the press briefing that's been held by the BJP. Union Minister Hardeep Singh Puri has slammed the leader of opposition Rahul Gandhi for his remarks on the Sikh community during his recent US visit. Let's listen in to what he has said. का इस्तेमाल नाप तोल कर करना was never his strong point. अगर आप बैठे और जो उनके statements हैं over the years उनको कुलेट करें तो उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं. A simplistic understanding of his statements would be that शायद कुछ issues पे उनको समझ नहीं है और वो he speaks out of either ignorance or a lack of understanding or knowledge. But of late मैं देख रहा हूं कि he is not in that mode. कुछ ऐसे issues हैं sensitive which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान he obviously had RPG audience of people wearing turbans. तो out of the blue he says कि भारत में Sikh community has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको. Now, I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. मैं आपको बताता हूं 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people. And the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पिट्रोडा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा. अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली. पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट. उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी. वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं.
जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं। बट आई थिंक दिस इज फार मोर सिनिस्टर। व्हाई इज दिस मोर सिनिस्टर? कि वो जो उनके सामने लोग बैठे थे, पुअर चैप्स, मेरे ही कम्युनिटी के हैं, जो आपने ईमानदारी से दे आर ट्राइंग टू ईक आउट अ लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और मेहनत करते हैं, उन लोगों को, क्योंकि उनका देश के साथ वैसा संबंध नहीं रहा, दे आर नॉट इन नॉलेज, उन लोगों के बीच में ये गलत नैरेटिव राहुल जी स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाता हूं। द अदर डे ही सेड एक बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कभी कुछ कह देते हैं। अभी ही हैज लेट लूज अ डायट्राइब अगेंस्ट द आरएसएस। यू नो, he ought to educate himself. If there is one organization which has come forward whenever we've had problems, it is the RSS. And to attack them and to attack the country. I mean, I think during this process, it has made it worse because he's not gone out of India as an ordinary citizen. As RP says, he has gone out as the leader of opposition. And what has happened during this? He has attacked the legal system in India. He has attacked, as I can see it, the outcome of the elections. He has said that our accounts were frozen. अरे भाई context तो बताओ, किसके अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, वो context तो देखो. No, but he goes on this and maligning the country, running down the country. Don't give credit to the fact that we are a robust democracy, we are the world's largest democracy, we are a mother of democracy. At least acknowledge your own ancestors and generations which have also contributed to this country. No, he runs the country down totally. And I think the icing on this is that Sikhs, whether they can wear turbans. I mean, I go around the country, I mean, I travel in the north, the south, extreme the backward areas, tribal areas. I have never come across any case where any Sikh has voiced a problem about wearing a turban or supporting a kara. And yet, during the pogrom against the Sikh community in 1984, many of my friends, because they were being attacked, they got clean shaven and shed their turban. Out of fear, not as a matter of choice. What you do as a matter of choice is entirely your choice and you should go ahead and do it. But the real problem is, we are today have this youngster who happens to be the leader of opposition. Now, he's drawn oxygen from the fact that in 3 elections put together, the Congress tally doesn't even come to 200. Last time they came to 99. So I think the time has come to nail this lie once and for all. And I call on my Sikh compatriots, my brothers and sisters, to see what kind of statements he is making and show them up for the nonsense that it is. You know, in the last 10 years, most of which, during large part of which time, I've had the privilege of being a part of the Honorable Prime Minister's team. What all he has done, every time the Honorable Prime Minister goes to the Gurdwara, he's wearing a turban. All the demands, outstanding demands of the Sikh community have been met up front. Kartarpur Sahib corridor, Veerbal Divas, all are this thing. I mean, they have been listed, etc. But more important, I think the sentiment in this government is, even the remaining issues, whether they are related to farmers, etc., we are happy to sit and talk and resolve outstanding issues. So I condemn in the strongest terms the statement that he has made about Sikhs not being able to wear turbans or karas, and I think this should be shown up for the lie that this is. Thank you. All right, viewers, there you heard the BJP's Union Minister right now, Hardeep Singh Puri, now responding to these statements that have been made by Congress MP Rahul Gandhi in the US over a host of issues, specifically also at this point of time igniting the Sikh community issue as well. Joining me on the broadcast is Congress spokesperson Sachin Rawal. I appreciate you joining us on the broadcast, sir.
in this context where, you know, the response has come from the BJP, which is in the straight response, targeting the Congress for the 1984 Sikh genocide and saying that in fact Rahul Gandhi is immature enough to have made these statements, as he does not understand that the context where in 1984 the kind of humiliation and pain the Sikh community had to undergo. देखिए सिमरन जी, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स करती है। राहुल गांधी जी अगर अपने संबोधन में देश की सच्चाई बता रहे हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति पहलू से देखती है। क्या देश में संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद नहीं किया जा रहा है क्या? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें लगातार मोदी तंत्र लागू है। आज की डेट में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और मोदी तंत्र लागू होता जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में यही कहा कि देश संविधान से चलता है, और उन्होंने कास्ट जो पॉलिटिक्स जो लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्म की पॉलिटिक्स की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो हम लोगों ने कहा है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे स्पष्ट हो जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर के कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं, राजीव गांधी जी पे आरोप लगाते हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी तो देखना चाहिए कि मौजूदा प्रधानमंत्री जाकर के दूसरे देश में जाकर के कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रोपेगेंडा करते हैं। राहुल गांधी जी देश की सच्चाई बता रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति रोटियां सेक रही है। मुझे लगता है कि अब देश भी समझ चुका है और देश भी जान चुका है और विदेश भी जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है, जो इस चुनाव में भी दिख गया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो सच्चाई है, देश की आवाज है, उसको सामने रखा है। और निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, उनका प्रोपेगेंडा नहीं सेट हो सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.